starting with the sixth part of the electrolysis, in which we will talk about the electrodes and the types of electrodes. The electrodes used in the process of electrolysis are of two types, passive and active electrode. Now, what are the passive electrodes? Passive electrodes are the ones that do not take part in the reaction. They do not take part in the reaction. And what are the active electrodes? Electrodes are the ones that take part in the reaction. In the electrolytic reaction, if the electrodes are not taking part, then they are known as the passive electrodes, and if the electrodes are taking part in the reaction, we call them as the active electrode. Now, the various types of passive electrodes that can be used depends upon the material that we have chosen. For example, graphite or platinum. If your electrodes are made up of graphite or of platinum, they both are your passive electrodes, because neither graphite nor platinum will take part in the electrolytic reaction. However, if instead of graphite or platinum, suppose we choose copper or silver or nickel, then all of them will take part in the electrolytic reaction and hence they are active electrodes. तो एक चीज को हम ध्यान रखेंगे कि पैसिव इलेक्ट्रोड है या एक्टिव इलेक्ट्रोड है, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपने अपना इलेक्ट्रोड बनाने के लिए कौन सा मटेरियल चूज किया है. अगर आपने कॉपर, सिल्वर या निकल चूज किया है तो वो ऑटोमेटिकली एक्टिव इलेक्ट्रोड की तरह बिहेव करेगा, लेकिन अगर आपने ग्रेफाइट या प्लैटिनम को चूज किया है देन इट विल एक्ट एज अ पैसिव इलेक्ट्रोड. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि आफ्टर ऑल हम ये क्यों और कब चूज करेंगे कि हमें पैसिव इलेक्ट्रोड यूज करना है या एक्टिव इलेक्ट्रोड यूज करना है. So this depends upon the requirement of the process of electrolysis. हम किस चीज़ का electrolysis कर रहे हैं या हम हमारे electrolysis का aim क्या है जिसके लिए हम किसी भी electrolyte को dissociate करने की कोशिश कर रहे हैं. तो बेसिकली इलेक्ट्रोड्स आपके डिसाइड करेंगे, बिकॉज आपका प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज में जो हमारा थर्ड रूल है that says the type of electrodes will decide the preference given to the ions. Another thing, अगर आपका passive electrode है, right, that means if your electrode is not taking part in the reaction, then the first two rules, the first rule was the lower the series in the electrochemical metals, the higher is the preference. And what was the second rule? The second rule says the concentration of the ions in the electrolyte. तो अगर आपका पैसिव इलेक्ट्रोड है तो ये दोनों रूल्स वर्क करेंगे, लेकिन अगर आपका इलेक्ट्रोड एक्टिव है then these two rules will be flouted and only it will be decided by the electrode that has been chosen that which particular ion will be deposited. Fine. Now we are starting with certain examples which will make it more clear to you that why at all the electrolysis is done. We are doing the first example, which is the electrolysis of lead bromide. Now, lead bromide, we are going to use it in the form of molten state. This is your molten lead bromide, and we are going to electrolyze it using a temperature of 380 degree C. Why 380 degree C? Because
the lead bromide melts at 380 degrees C. Then, since it is lead bromide and it is in its molten state, then what are the various types of ions that will be present in it? The first type of ion will be the lead ion, right? And the second type is going to be the bromide ion. So first is the lead ion, then is the bromide ion. There are the various types of ions, the lead ion and the bromide ion. The temperatures are to be maintained at 380 degrees C. Then here, the electrolytic cell. The electrolytic cell. The material that we will use for the electrolytic cell is going to be silica. It is going to be silica. Why? Because silica is able to tolerate very high temperatures and it is also non-reactive in nature. Silica जो है इतना high temperature को easily tolerate कर लेगा and because it is non-reactive also, hence we will be choosing silica for the electrolytic cell. अब आपके तीन conditions complete हो गए. Number one, we have decided the temperature. Number two, the type of ions that will be produced, and the material of your electrolytic cell. It is going to be silica. Now comes the next point, which is your electrodes. What type of electrodes are we going to use? Here we will be using the electrodes as graphite. जो electrode हम choose करेंगे, that is going to be of graphite. Why are we choosing graphite? Because of two reasons. Number one, first of all, it is a passive electrode, and the second reason we will be discussing later while we will see the reactions occurring in this electrolytic process. So अब हमने क्या किया? हमने molten lead bromide लिया. मोल्टन लेड ब्रोमाइड को 380 डिग्री सी पर मेल्ट किया और क्योंकि इसमें इतना हाई टेम्परेचर था, इस वजह से हमने जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का मटेरियल लिया वो कौन सा लिया? सिलिका लिया, सो दैट इट कैन टॉलरेट हाई टेम्परेचर्स. जो आयंस आफ्टर डिसोसिएशन हमें मिले वो थे लेड के और ब्रोमाइड आयंस, राइट? नाउ आफ्टर दीज फोर बेसिक रिक्वायरमेंट्स, लेट अस सी अब होगा क्या. आपका इलेक्ट्रोड, ऑब्वियसली एक इलेक्ट्रोड कौन सा है? दैट इज द कैथोड, एंड which is the other one? That is the anode. Anode and cathode. Now, we know that the anions move towards the anode and cations moves towards the cathode. ये हमने याद किया था C2C and A2A. ठीक है? So this is your anion, the bromide is the anion and lead is your cation. So obviously the lead ions being cation will move towards the cathode, right? और हमने four basic principles देखे थे, that cations will migrate, will discharge and then they will deposit. So cathode की तरफ कौन migrate कर रहा है? Lead. So it will be the reaction that will be taking place at cathode is going to be Pb2 positive. ये migrate किया, lead is migrating. Then it will discharge. How will it discharge? By the gain of 2 electrons. So plus 2 electrons. And when it will gain the electrons, what will it produce? It will produce lead. And this lead will be deposited at the cathode, right? So cations migrating to the cathode, discharging, and after discharging they are getting deposited at the cathode. Now let us talk of anode. What will happen in anode? Since anions move towards the anode,
So what will happen here is the bromide ions will migrate towards the anode. How will they discharge? Because they have got one negative charge, so they need to lose that negative charge in order to discharge. So Br negative minus 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक नेगेटिव चार्ज है तो न्यूट्रल होने के लिए they need to lose that 1 electron, and hence after losing that 1 electron it will produce bromine atom. Br minus 1 electron is giving you 1 atom of bromine, but we know that bromine is a diatomic gas. That means in one molecule of bromine, 2 atoms are present since it's a diatomic gas. एक molecule में 2 atoms are present. So what is happening here? We are getting 1 atom of bromine. So obviously it is an unstable atom. Again, another anion of bromine will also lose its 1 electron and will produce another Br atom. So here you can see एक ब्रोमाइड आयन ने एक ब्रोमीन एटम प्रोड्यूस किया, दूसरे ब्रोमाइड आयन ने एक और ब्रोमीन एटम प्रोड्यूस किया. नाउ वी हैव गॉट 2 bromine atoms. Now what will happen? Now this bromine atom and the other bromine atoms, Br plus Br will give you Br2. ठीक है? So here at anode you will be getting the bromine gas. I am repeating it. कैथोड पर कैटायंस विल डिपॉजिट. सो इस पूरे केस में लेड ब्रोमाइड में हमारे पास लेड आयन था एंड ब्रोमाइड आयन था. सो obviously lead ion migrated towards the cathode and the bromide ion migrated towards the anode. So cathode का reaction क्या हुआ? The cation which was lead migrated towards the cathode. There it gained 2 electrons, and by gaining these 2 electrons it produced the neutral atom of lead. What happens at anode? Here the bromide ion which was produced after the dissociation of lead bromide, 1 ion of bromide will lose its 1 electron, will produce a bromine atom. Again another bromide ion will also lose its 1 electron and will produce one more bromine atom. Now sometimes the students get this confusion कि हमारे पास एक ब्रोमाइड आयन था जिसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया और ब्रोमीन एटम प्रोड्यूस किया. ठीक है, लेकिन ये दूसरा ब्रोमाइड आयन कहाँ से आ गया? सो क्लास यू नीड टू बी वेरी क्लियर इन योर माइंड कि जिस समय लेड ब्रोमाइड का डिसोसिएशन हुआ था तो उसके पास एक लेड और एक ब्रोमाइड आयन नहीं था. It had many lead ions and it had many bromide ions. एक आयन प्रोड्यूस नहीं हुआ था डिसोसिएशन के बाद. डिसोसिएशन के बाद we had large number of bromide ions and large number of lead ions. तो in any case सारे के सारे bromide ions they will be moving towards the anode और सारे के सारे cations will be moving towards the cathode. इसलिए एक ब्रोमाइड आयन ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, ब्रोमीन एटम बनाया. सिमिलरली दूसरे ब्रोमाइड आयन ने भी एक इलेक्ट्रॉन लूज किया और ब्रोमीन एटम बनाया और अल्टीमेटली 2 ब्रोमीन एटम्स ने मिलकर एक ब्रोमीन मॉलिक्यूल प्रोड्यूस किया. ठीक है, अब यहाँ एक चीज और ध्यान देंगे. कैथोड के ऊपर वी आर सीइंग दैट
the cation, which is lead in this case, is gaining 2 electrons. Now again a question, ये जो 2 electrons lead gain कर रहा है, this lead is undergoing which reaction? Reduction reaction. What is reduction? The addition of electrons. तो ये जो 2 electrons lead ion में add हो रहे हैं, ये दोनों electrons आ कहाँ से रहे हैं? From where did the lead ion get these 2 electrons? So the lead is gaining these 2 electrons which were lost by the bromide ions. देखो जो पूरा रिएक्शन हो रहा है वो सेम इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हो रहा है, वहीं पर लेड आयंस भी है, वहीं पर ही ब्रोमाइड आयंस भी है। ब्रोमाइड आयंस भी उसी इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है और उसी में सेम टाइम पर साइमल्टेनियसली जब ये अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है, साइमल्टेनियसली जो कैटायन है, जो लेड है, इट इज गेनिंग द सेम 2 electrons which were lost by these 2 bromide ions. That is why both the lead as well as the bromide ion will be able to discharge themselves. The cation will be discharged by the reduction and the anions will be discharged by the oxidation. Fine. Now, what will you observe at the end of the electrolysis of the lead bromide? At the end, what will be the observation? At cathode, कैथोड पर क्या ऑब्जर्वेशन आएगी और एनोड पर कौन सी ऑब्जर्वेशन आएगी? अब देखते हैं। देखिए, the cathode is producing lead, and you know when we talk of observation, we are actually talking of the color, we are talking of the smell, or we are talking of the fumes or whatever. So at cathode, we will be able to see a deposition of grayish white metal. We are not going to write in observations that this metal is lead. ये हम observation में नहीं लिखेंगे. We will be only writing जो हम we will be able to see, that is grayish white metal is deposited at cathode, right? And what will we observe at anode? So anode पर since bromine gas is liberated, and the color of bromine gas is reddish brown, we will simply say reddish brown gas liberates, right? The reddish brown gas liberates. ध्यान रखेंगे कि जब भी हम गैस के टर्म्स में बात करेंगे, we are never going to say that the gas is going to get deposited, because gas will not be able to deposit, it will simply liberate. So the observations of molten lead bromide is at the end, at cathode grayish white metal is deposited and at anode reddish brown gas liberates. अब इस पूरे के पूरे प्रोसेस में बच्चे आपको सिर्फ 2 चीजें ध्यान में रखनी है, वो है रिएक्शन एट कैथोड एंड रिएक्शन एट एनोड। और इस पूरे को याद रखना इज वेरी सिंपल। दुनिया में कोई भी इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन आपको दे दिया जाए, आप अगर इस कॉन्सेप्ट को याद रखे हुए हैं C2C एंड A2A, तो आप कोई भी इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन को बता सकते हैं। इस केस में जो हमारा इलेक्ट्रोड यूज हुआ था वो किस चीज का बना हुआ था? दैट वाज ग्रेफाइट। ग्रेफाइट मतलब इट वाज अ पैसिव इलेक्ट्रोड। पैसिव मतलब it was not taking part in the chemical reaction and hence it will not bring any change in the deposition of cations or anions.
क्योंकि पैसिव है, वो इंटरफेयर नहीं करेगा किसी भी इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन में। जिन आयंस को कैथोड की तरफ जाना है, दे विल सिंपली माइग्रेट, दे विल डिस्चार्ज एंड दे विल डिपॉजिट, दैट्स इट। सो पैसिव इलेक्ट्रोड का आपने देखा, अगर किसी भी इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हम पैसिव इलेक्ट्रोड को यूज कर रहे हैं, पैसिव मतलब द इलेक्ट्रोड विच इज नॉट टेकिंग पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन, तो ऐसा इलेक्ट्रोड हमारे इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन में किसी भी तरीके का कोई भी चेंज नहीं लाएगा। अब इसमें हमें याद क्या रखना है, C2C A2A का, स्पेशली जब हमारा इलेक्ट्रोड जो है वो पैसिव है यानी नॉन रिएक्टिव है। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करना चाह रही हूँ, एंड दैट इज कि अगर मान लीजिए मोल्टन लेड ब्रोमाइड की जगह इफ समवन आस्क यू कि नहीं हमारे पास लेड ब्रोमाइड नहीं है, लेट्स हैव मैग्नीशियम क्लोराइड, सपोज वी हैव दिस सॉल्ट, ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड, एंड दिस मैग्नीशियम क्लोराइड इज ऑल्सो इन द मोल्टन स्टेट, ठीक, मोल्टन मतलब फ्यूज्ड, पिघला हुआ, ठीक, यानी कि व्हेन दिस मैग्नीशियम क्लोराइड इज मोल्टन, जिस समय वो पिघल गया, then what are the type of ions we'll be getting? We'll be getting Mg2 positive, right? And we will be getting chloride ions, Cl negative, दो तरीके के ions मिलेंगे, ठीक है। अब इस बेसिक प्रिंसिपल को यूज करके आप मुझे बताइए, अगर हमारा इलेक्ट्रोड पैसिव है, राइट, सपोज ग्रेफाइट हम यूज कर रहे हैं, if we are using graphite, then what will be the reaction observed at cathode and what will be the reaction observed at anode? क्या याद रखना है, C2C A2A। देखो कितना आसान है, कैथोड, ठीक है, here is the cation Mg2 positive, इलेक्ट्रोड कैसा है, पैसिव, नॉन रिएक्टिव, ठीक है। सो व्हाट विल माइग्रेट टुवर्ड्स द कैथोड, Mg2 पॉजिटिव, फाइन, Mg2 पॉजिटिव, करेक्ट, Mg2 पॉजिटिव इज माइग्रेटिंग। नाउ व्हाट इज द सेकंड स्टेप, आयन विल माइग्रेट एंड देन इट विल डिस्चार्ज, discharge matlab it will gain electrons. In the case of cation, how many electrons? Obviously 2 positive है, तो discharge होने के लिए it will require 2 electrons, right? And what will be deposited? Mg, neutral magnesium atom will be deposited. So that's correct. चलिए अब आ जाते हैं एनोड के ऊपर। Anode, what will happen? The anion, what is the anion here? The chloride ion. So this chloride ion will be migrating towards the anode. Migrate हुआ, migrate होने के बाद discharge हुआ. How will it discharge? By the loss of electron, क्योंकि इसके ऊपर 1 negative charge है. So minus 1 electron. What will it produce? Chlorine atom. 1 chlorine atom. It is producing 1 chlorine atom. अब again, chlorine is a diatomic gas. जैसे कि bromine थी, diatomic gas है. That means one molecule contains 2 atoms of chlorine. So Cl2 will be produced. How will it produce? Another ion of chlorine, that is chloride ion, will be discharged, okay, and will produce another atom of chlorine, okay. This Cl and the other Cl, Cl plus Cl together will form chlorine gas, and these two electrons which were lost at the anode by the chloride ions will be gained by the
मैग्नीशियम साइमल्टेनियसली। जिस टाइम पर क्लोराइड आयंस अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहे हैं, सेम टाइम पर जैसे ही ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस होंगे, मैग्नीशियम इमीडिएटली इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा। एज अ रिजल्ट दे बोथ विल बी डिस्चार्ज एंड मैग्नीशियम एंड क्लोरीन molecules are produced. यहाँ तक क्लियर हो गया? चलिए, now let us talk of certain very basic questions in the case of molten lead bromide. इस molten lead bromide में एक बड़ा important question आता है, why the graphite is used as the passive electrode. देखो, पैसिव इलेक्ट्रोड तो ग्रेफाइट की जगह हम लोग प्लैटिनम भी यूज कर सकते थे। मैंने आपको बताया था कि 2 तरीके के जनरली यूज होते हैं पैसिव इलेक्ट्रोड्स, एक है ग्रेफाइट एंड द अदर वन इज प्लैटिनम। नाउ द क्वेश्चन इज कि लेड ब्रोमाइड के इलेक्ट्रोलिसिस के लिए हमने ग्रेफाइट को क्यों चूज किया और प्लैटिनम को क्यों चूज नहीं किया? इसका बड़ा कन्विंसिंग आर्गुमेंट है कि जो प्लैटिनम है, जिस समय पर ब्रोमीन गैस लिबरेट करती है, उस समय जो प्लैटिनम है reacts with the bromine gas. As a result, the platinum gets corroded by the volatile nature of bromine gas, और we don't want that kind of burning of the platinum electrode, क्योंकि platinum जो है वो ब्रोमीन के volatile vapors के साथ react करता है, whereas graphite is a complete passive electrode. ग्रेफाइट के ऊपर ब्रोमीन के वेपर्स का कोई असर नहीं होता। इस वजह से इंस्टेड ऑफ प्लैटिनम द ग्रेफाइट इज प्रेफर्ड while the electrolysis of molten lead bromide is done. So class, I am through with the electrolysis of molten lead bromide. That's all for the day. Thank you.